Hi everyone. First of all, wishing you a very happy Diwali. Play safe, be safe. Now moving on. First of all, thanking you for subscribing my channel and liking the first video. Now as we progress, couple of feedback which I had received. One was to write the characteristics of each of these houses within the houses to understand it better. So that's what I've done. So now we'll move one step ahead in understanding different planets. What are their properties? What's their nature? What's Kendra, Trikon? What are malefic houses? What is the planets when placed in different rashis get maximum strength or the least strength? What are different aspects or the different steps to analyze an horoscope? Yeah, so we progress as we move forward. So again, whenever you are downloading or running your Kundli through any software, in the first house there will be a word used which is called the AS. AS here means the ascendant or the lagna, right? That's how we start. Now moving on to the planet. First planet in the Vedic astrology is Sun, followed by Moon, Mars, Mercury, Jupiter, Venus, Saturn, Rahu, and Ketu. Now, each of these planets has a certain properties. For example, Sun is the karka or is the gives us the details about or the strength about our soul. Moon signifies mind. Mars, strength. Mercury, speech. For example, when you're speaking to someone who gives you a very impromptu kind of an answer, you can immediately say this person has a strong Mercury. Jupiter is a significator of knowledge and happiness. Venus, semen, your creativity. Saturn, grief. Now, each of these planets has a certain nature. So, M here means malefic, B means benefic. Malefic means not good, bad. Benefic means beneficial or good. So Sun is a malefic planet, cruel planet. Moon, benefic, a beneficial planet. Mars, again, Mangal, is malefic. Mercury is neutral. Neutral basically means this planet does not have its own identity or own property. It will behave in the manner in which it is placed. For example, or the planet which it is placed with. For example, if Mercury is placed with Mars, Mars being a malefic planet, it will give you a negative result. For example, if Mercury is placed with Jupiter, Jupiter being a benefic planet, it will give you a positive result. So Jupiter again is a benefic planet. Venus is again a benefic planet. Saturn, Rahu, and Ketu, these are all malefic planet. Now, what is the basic terminology used in Vedic astrology? So whenever you read somewhere, it is written Kendra. Kendra basically means house number 1, 4, 7, 10. For example, if any planet is placed in the Kendra, which is your house number 1, 4, 7, 10, gives you a positive result. Trikon, again 1, 5, and 9. Again, it will give you a good result. Malefic houses is 6, 8, 12. For example, 6, 8, 12. Any house which goes under these, any planet which goes under these houses will gives you a wrong result or a bad result or a negative result. There are certain exceptions as well. House number 3, 6 and 11. अगर कोई पाप पीड़ित प्लैनेट अगर हाउस नंबर 3, 6 और 11 में जाता है तो वो आपको रिजल्ट अच्छे देगा. Now, retrogression. So in certain horoscope, when you will see, you will find a planet which is placed under bracket. For example, there's a planet like Saturn. It is placed under bracket, which means Saturn यहाँ पे retrograde है, Saturn यहाँ पे वक्री है. For example, I've just given for an example point of view, Venus in house 5 is under bracket. It means Venus यहाँ पे retrograde है, जब Venus यहाँ पे वक्री है, तो ऐसे केस में Venus 5th हाउस का भी रिजल्ट देगा और चौथे घर का भी रिजल्ट देगा. ये हम अंडरस्टैंड करेंगे एज वी मूव फॉरवर्ड. नाउ हाउ डज द स्ट्रेंथ प्ले? सो व्हेन डिफरेंट प्लैनेट्स आर प्लेस्ड इन डिफरेंट राशि, वो उच्च के प्लैनेट हो सकते हैं, उच्च की ताकत दे सकते हैं, या नीच का रिजल्ट दे सकते हैं. तो फॉर एग्जाम्पल, इफ सन इज प्लेस्ड विद द एरीज साइन विच इज द साइन नंबर 1, वो आपको अपना 100% रिजल्ट देगा, उच्च का सूर्य होगा. साइमल्टेनियसली अगर सन जो है आपके लिब्रा में, मतलब 7वीं राशि में अगर प्लेस है, तो वो आपको नीच का राशि देगा, नीच का रिजल्ट देगा, बहुत ही खराब रिजल्ट देगा. मून इज एक्सॉल्टेड इन टॉरस विच गिव्स यू 100% रिजल्ट. मून व्हेन प्लेस्ड इन स्कॉर्पियो विल गिव यू नेगेटिव रिजल्ट. मार्स
it's exalted in Capricorn and malefically placed when it's in placed in Cancer राशि. Mercury Virgo exaltation मतलब 100% रिजल्ट देगा, मैलिफिक आपको 100% खराब रिजल्ट देगा. जुपिटर कैंसर में बेस्ट रिजल्ट देगा, मैलिफिक जब होगा तो कैप्रिकॉन में वर्स्ट रिजल्ट देगा. वीनस स्पाइसेस में 100% रिजल्ट देगा पॉजिटिव, मैलिफिक अगर वर्गो में पेस्ट होगा तो वो 100% नेगेटिव रिजल्ट देगा. सैटर्न लिब्रा में एक्सॉल्टेड है, मतलब अगर सैटर्न आपका 7वीं राशि में है तो उच्च का शनि है, और अगर वो एरीज में है तो वो मैलिफिक होगा. वैसे ही हर प्लैनेट की डिफरेंट एस्पेक्ट्स है या डिफरेंट दृष्टि है जिससे वो एक दूसरे घर को देखता है. तो फॉर एग्जाम्पल मार्स की 3 दृष्टि है, 4, 7 एंड 8. जुपिटर की फिर 3 दृष्टि है, 5, 7, 9. सैटर्न 3, 7, 10. राहु 5, 7, 9. केतु हैज नो एस्पेक्ट. तो आई विल एक्सप्लेन यू. फॉर एग्जाम्पल Jupiter here has 3 aspect which is 5, 7 and 9. Now for example if you look at this horoscope, Jupiter is placed in house number 10. तो आप ये कैसे कैलकुलेट करोगे? जब कोई प्लैनेट जिस घर में बैठा है काउंटिंग हमेशा उसी घर से होगी. सो व्हेनेवर अ प्लैनेट इज प्लेस्ड इन एनी हाउस यू हैव टू डू द काउंटिंग फ्रॉम दैट हाउस इटसेल्फ. फॉर एग्जांपल जुपिटर की 5वीं दृष्टि कहाँ हुई? 1, 2, 3, 4, 5. तो जुपिटर मेरे प्रोफेशन के घर में बैठ के 10th हाउस के घर में बैठ के मेरे सेकंड हाउस को देख रहा है जो मेरे वेल्थ का हाउस है. दैट इज हाउ यू विल सी. आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर. Now, to understand, there are basically 3 steps to analyze in horoscope. पहला, आपके कौन से हाउस में कौन सा प्लैनेट बैठा है, फिर उसकी लॉर्डशिप क्या है, I'll just explain, and कारका क्या है. फॉर एग्जाम्पल इफ यू लुक एट दिस एग्जाम्पल, मेरे दूसरे घर में मून बैठा है. तो अगर मून मेरे दूसरे घर में बैठा है तो क्या रिजल्ट देगा वो मुझे समझना बहुत जरूरी है. फॉर एग्जाम्पल इफ मून इज सिटिंग इन द सेकेंड हाउस, व्हाट रिजल्ट विल मून गिव? That understanding has to be clear with us, then only we can comprehend. Secondly, the Lord. For example, if you look at the second house, here the number is 10, 10th राशि. तो 10th राशि कौन सी हुई? कैप्रिकॉन. कैप्रिकॉन का मालिक कौन सा हुआ? शनि. तो शनि कहाँ बैठा है? मेरे 12वें घर में. सो कैसे कॉम्प्रिहेंड करेंगे? मेरे दूसरे घर का मालिक या मेरे दूसरे घर का लॉर्ड 12वें घर में बैठा है. तो जो प्लैनेट जिस घर का मालिक है या जिस घर का लॉर्ड है वो हमेशा उसी घर का रिजल्ट देगा. तो यहां पे हाउ विल बी कॉम्प्रिहेंड? सो द लॉर्ड ऑफ माय सेकंड हाउस विच इज द हाउस ऑफ वेल्थ is sitting in the house number 12 which is the house of loss, so it will give me loss. So the lord of the house of wealth is sitting in the house of loss, will give me loss. So that's how it is comprehended. So as we move progress, we will start understanding about how does the characteristics of each of these planets play when they are placed in different houses as we progress in the subsequent video. Thanks again once again and wish you a very very happy Diwali.